One more question on kinematics of flow. Find the convective acceleration at the middle of a pipe which converges uniformly from 0.4 meter diameter to 0.2 meter diameter over 2 meter length. The rate of flow is 20 liters per second. If the rate of flow changes uniformly from 20 liters per second to 40 liters per second in 30 seconds, find the total acceleration at the middle of the pipe at 15 seconds. So in this question we have to find two things. First, convective acceleration at midpoint of pipe when flow rate is 20 liters per second, and second, if flow is also changing 20 liters to 40 liters in 30 seconds, then find out the total acceleration. फर्स्ट फ्लो कांस्टेंट है आपका और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना. कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जो स्पेस के साथ चेंज होता है और लोकल एक्सेलरेशन जो टाइम के साथ चेंज होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है और 20 लीटर्स पर सेकेंड कांस्टेंट डिस्चार्ज गिवन है. एंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में जब डिस्चार्ज आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है 30 सेकेंड्स में 20 लीटर्स टू 40 लीटर्स हो रहा है, तब आपको टोटल एक्सेलरेशन निकालना है. टोटल एक्सेलरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन प्लस लोकल एक्सेलरेशन. लोकल एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय it is change in with respect to time also. Okay, so first, convective acceleration at midpoint of a pipe when discharge is 20 liters per second. And second part of the question is to find out convective plus local acceleration. This is called total acceleration at midpoint of the pipe when discharge is changing from 20 liters to 40 liters in 30 seconds. So we will solve first part of the question. First we have given this is a pipe flow. So in pipe flow जो आपका फ्लो होगा वो होगा आपका वन डायमेंशनल, ओनली इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा होगा, इन एक्स डायरेक्शन. पाइप की लेंथ गिवन है 2 मीटर. पाइप आपका कन्वर्ज हो रहा है फ्रॉम 0.4 मीटर डायमीटर टू 0.2 मीटर diameter. So this diameter is 0.4 meter and this diameter is 0.02 meter. This length is 2 meter. Midpoint will be at 1 meter length here. Point P. Okay. Now it is a one-dimensional flow. So velocity का component सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा? In x direction, ui. This is velocity vector. J and K में velocity components V and W 0 होंगे. Same acceleration का भी सिर्फ और सिर्फ एक ही component होगा in x direction, ax. So
ए एक्स कितना हो जाएगा आपका u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। बाकी सारे टर्म्स आपके ज़ीरो हो जाएंगे। नाउ हमें u फाइंड आउट करना है और डेल u अपॉन डेल एक्स, तो हमारा ए एक्स डिटरमाइंड हो जाएगा। सपोज यहाँ पर डायमीटर है d एंड एरिया है a। यहाँ पर डायमीटर है आपका d1 एंड एरिया है a1। यहाँ पर डायमीटर d2 एंड एरिया है a2। So first we will calculate u. Suppose u is the velocity at distance x. This distance is x. Diameter कितना होगा at distance x dx? It will be d1 plus d1 minus, this is d1 minus d2 upon distance L into x. So d1 is given 0.4 minus 0.2 upon 2 into x. So dx will come 0.4 minus 0.1 x in meter. So this is dx. U, as for continuity we know discharge cannot be changed, so q will always be q. q का वैल्यू कितना होगा एरिया इंटू वेलोसिटी v1। dx पर एरिया ax इंटू वेलोसिटी कितनी है u। ax की वैल्यू पाई इंटू डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 into u। q is also given in the question 20 liters per second। liters per second को you will change in meter cube per second। so you can calculate u। q upon pi dx square divided by 4। so this q is 20 liters per second। just change the unit and calculate the value। so you will come 0.02546 in bracket 0.4 minus 0.1 x का whole square। u आ गया। now del u upon del x। so it becomes 0.02546 into minus 2 in bracket whole equation 0.04 minus 0.1 x। minus 2 plus 1 minus 1 into x का फिर से होगा तो minus 0.1। okay, so this value will become, so del u upon del x will come 0.00
5093 in bracket 0.4 minus 0.1 x and minus 1 in power. So convective acceleration will come ax is equal to u into del u upon del x. u की वैल्यू मालूम है आपको, del u upon del x का वैल्यू मालूम है. Just put all the values. Zero point 02546 into 0.4 minus 0.1 x whole square of minus 2 into 0.05093 0.4 minus 0.1 x power minus 1. Okay, now we have to calculate convective acceleration at midpoint. At midpoint x का वैल्यू हो जाएगा आपका x is equal to 1 मीटर. मिड पॉइंट पर है ना, क्योंकि पाइप का लेंथ है 2 मीटर, सो एट मिड पॉइंट इट विल बी 1 मीटर. नाउ 1 मीटर वैल्यू पुट कर देंगे हम x की जगह पर. सो वी विल फाइंड आउट a convective acceleration at midpoint. After solving you will get ax at 1 meter or at midpoint will be equal to 0.00480 meter square per second. Sorry, meter per second square. Okay. Now next part of the question. When discharge is also changing from 20 liters to 40 liters in 30 seconds. 20 liters means 20 divided by 1000 meter cube per second to second part of the question. 40 upon 1000 meter cube per second in time 30 seconds.